हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हम। आज के लेक्चर में हम MCQs कवर करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस लेक्चर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। सो द ऑप्शंस आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट जनरेशन। मैंने बैच प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल में लेक्चर में कवर किया है। जिन्होंने हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो चैनल एक बार जाके ज़रूर विजिट करें। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर started with using vacuum tubes as the basic components, and the options are first, second, third or fourth, and the correct option is first generation। हमने फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स पढ़ा था, सेकेंड में मैग्नेटिक ड्रम्स पढ़े थे, थर्ड में आईसी चिप्स पढ़े थे, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़े थे। Now next question is the generation based on VLSI microprocessor, very large scale integration, and the options are first, second, third or fourth, and the correct option of this is fourth generation. Next question is the fourth generation was based on integrated circuits, is it true or false? ऑप्शन बी। फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर पढ़े थे, ना कि इंटीग्रेटेड चिप्स, और इंटीग्रेटेड चिप्स हमने थर्ड जनरेशन में पढ़े थे, ना कि फोर्थ जनरेशन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन एमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स मीन्स एंड मेथड्स ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स think like human beings, and the options are blockchain, VR, AI, cloud computing, and the correct option is option C, AI, artificial intelligence। मैंने डिटेल में लेक्चर में कवर किया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके एक बार चैनल ज़रूर विजिट करें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ULSI, ultra large scale integration, under lower scale integration, ultra lower scale integration, under large scale integration. So the correct option is option A, ultra large scale integration. Let's move forward. In this generation, time sharing real time networks distributed operating system was used in first generation, second, fifth or fourth. So these all components are used in fourth generation. Next question is HLLL stand for high level language, high layman's language, high level lesson, high layman's lesson. So the correct option of this question is high level language. Next question is the period of generation was 1952 to 1964। कौन सी जनरेशन में जो है इनका टाइम पीरियड है 1952 to 1964 था, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ और फोर्थ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशन इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम वर built, and the options are first, second, third, fourth, and the correct option is third generation. Next is fifth generation computers are built on system knowledge, programming intelligence, artificial intelligence, VLSI, very large scale integration, and the option is D, VLSI. Next is select the technology that is used in first generation of computer, and the options are transistor, LSI,
vacuum tubes, VLSI, none of the above. And the correct option is vacuum tubes. हमने फर्स्ट जनरेशन में vacuum tubes के बारे में पढ़ा था. Next is select the name of generation in which operating systems were bullet. आंसर आपको इधर दिख ही रहा है, थर्ड जनरेशन में. Next is the processed data is called, processed data को हम क्या बोलेंगे, information. Next is machine language is difficult to program, machine dependent, error prone, all of the above. And the correct option is all of the above. Next question is, fifth generation computers are built on system knowledge, programming intelligence, artificial intelligence, VVLSI. Yes, and the correct option of this question is artificial intelligence. Next question is, select the technology that is used in first generation of computer, and the options are transistors, LSI, vacuum tubes, VLSI, none of the above. And the correct option is vacuum tubes. Select the name of generation in which introduced microprocessor. Fourth generation, second generation, both A and B, third generation, all of the above. And the microprocessor introduce हुआ था फोर्थ जनरेशन में. आई थिंक कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, second generation computers are manufactured of vacuum tubes, LSI, transistors, VLSI, none of the above. And the correct option is VLSI. A computer contains a CPU, central processing unit, memory, input and output unit, all of the above. So the correct option is all of the above. An integrated circuit is a complicated circuits fabricated on a tiny silicon chip, much costlier than a single transistor and integrating device. And the correct option of this question is fabricated on a tiny silicon chip. Next question is, select the three decision making actions performed by ALU of a computer. Less than, greater than, equal to, or all of the above. And the correct option is all of the above. Next, select the name of generation in which Nepal conducts a computer for census of 2028 PS. First generation, third generation, second generation, or fourth generation. And the correct option is C part, second generation. Select the purpose of logarithm and flow chart. And the options are, know the memory capacity, specify the problem completely and clearly, direct the output to a printer, identify the base of a number system. And the correct option of this question is specify the problem completely and clearly. Next question is, select the year when the Pascaline was originated. And the option are 1617, 1642, 1620, 1837. And the correct option is 1642. Next is, select which one is the first computer to use keep program concept. And the options are UNIVAC, EDSAC, ENIAC, DPARTIS, none of the above. And the correct option is EDSAC. Once the user loads acceptable program and provides need data, the computer does not need human intervention. This feature is known as
ऑटोमेटिक, जहाँ पे इंसानों की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे मशीन्स ऑटोमेटिक काम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स माइक्रोप्रोसेसर्स was introduced, first, second, third or fourth generation? And the correct option is fourth generation. Speed of first generation was used in nanoseconds, milliseconds, nanomilliseconds, microseconds. And the correct option is milliseconds. Chip is a common name for transistor, resistors, integrated circuits, semiconductors. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. सो हम इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं. होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.